welcome back to my channel. So for today's video, I'll be doing the makeover of my living room. So this is how the room looked before. So if you want to know how I did the whole makeover of this room, please keep on watching. So the first section that I started working on is this wall. Actually रूम बहुत ज़्यादा प्लेन लग रहा था, so I wanted to give more color to the room. इसके लिए the best part is to paint. So I'll start off by removing the TV from the wall and then just removing the extension and everything else that is on the wall, and then I'll start removing all the stickers. So I wanted to keep the theme of the entire room teal, तो मैंने ये ड्यूलिक्स का कलर लिया and then I started painting the entire wall. एंड एक्चुअली ये जो रोलर था वो काफ़ी छोटा पड़ रहा था एंड वॉल बहुत ज़्यादा लंबी थी, सो मैंने यहाँ पे एक जुगाड़ किया है. आई टुक दिस मॉप स्टिक एंड वो मैंने रोलर में लगा के आई पेंटेड द एंटायर वॉल विद दैट, स्पेशली द अपर पार्ट ऑफ द वॉल. So this is how the wall looks after the first coat, and then I went over with the second coat. So we had this sofa set in our living area, but it looked a bit old-fashioned, and because of the color also it looked a bit dirty. So I wanted to give a little bit of makeover and make it look a bit modern. For that I got these sofa covers from Amazon. So I just covered my sofa with this sofa cover that I got from Amazon. But अभी इसके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे एक्चुअली कुशन ये सोफ़े का डिज़ाइन है, तो उसकी वजह से ये थोड़ा यहाँ पे ऐसे लूज़ आ रहा है. सो व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज़ आई विल इंसर्ट सम फोम हियर, जिससे ये गैप ख़त्म हो जाए और ये एकदम ऐसे आए. सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी हो रही है. सो बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन ऑफ द सोफ़ा उसकी वजह से यहाँ पे भी गैप आ रहा है. सो आई थिंक फोम इंसर्ट करने के बाद इतना इशू नहीं रहेगा. So next I decided to change the curtains of the room.
कर्टेन्स का कलर आई थिंक बहुत डार्क था, जिसकी वजह से पूरा रूम बहुत डार्क लग रहा था। एंड टू मेक इट अ लिटिल ब्राइटर आई गॉट दीज वाइट एंड टील कलर कर्टेन्स जो एकदम परफेक्टली मैच हो रहे थे रूम से। सो घर पे ये 2 स्टूल्स पड़े हुए थे इन येलो एंड ब्लू कलर, एंड आई वांटेड टू गिव सम मेकओवर टू दीज स्टूल्स, जिसके लिए आई स्टार्टेड पेंटिंग द लेग्स ऑफ द स्टूल ब्लैक। मैंने उनको पूरा ब्लैक स्प्रे पेंट से पेंट कर दिया। So next I got this white marble print wallpaper from Flipkart, and I just cut this according to the size of the stool and I just stick it onto the stool, and इससे stool को एक totally नया makeover मिल गया and it looks totally different from what it looked earlier, and I absolutely love how it turned out. सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू दिस वॉल, एंड इस वॉल के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे हमने एक पहले पेंटिंग लगा रखी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे मार्क्स हैं, एंड मेरा मेन एम था कि ये कवर हो जाए। एंड सो फॉर दैट मैंने वो सेम वॉलपेपर यूज़ किया है एंड मैंने उस वॉलपेपर को यहाँ पे स्टिक कर दिया है, एंड उसके ऊपर मैंने ये पेंटिंग लगा के चारों तरफ से आई गॉट दिस ब्लैक टेप विच कम्प्लीटली चेंज द लुक। सो नेक्स्ट वी हैड दीज शेल्व्स जो बहुत बोरिंग लगी थी बिकॉज हैड द सेम कलर, सो आई गॉट दिस ब्लैक टेप एंड मैंने पूरे में वो स्टिक कर दिया। सो नाउ दिस एक्चुअली लुक्स लाइक दी ब्लैक शेल्व्स दैट वी गेट ऑनलाइन। So for the next DIY, I got these white hooks. Actually, I wanted something like this gold hook for to hang the lamps, but online ये बहुत ज़्यादा expensive थे, so I thought I can just spray paint it and make it look like a very classy hook for my lamps. So we had these bamboo stools or mooda, whatever you call it, but ये बिल्कुल भी थीम के साथ नहीं जा रहा था, and the red and green looked very like different from the entire vibe of the room. So I thought I should spray paint it, and spray paint करके इसका totally look change हो गया। So as you all know, एक अच्छे ambience के लिए light plays a very important role. So that's why I added these lamps into the ceiling, जो ये बहुत टाइम से घर पे रखे हुए थे। So as you can see, this wall looks so plain and boring, and to give this wall a makeover, I added this foldable sofa cum mattress, and to cover it I got this white fabric which is already lying at home, and then I just added these teal cushion to match the vibe.